everyone, welcome to my channel Board Exam Preparation. Today I am discussing 10th class NCERT Chemistry Chapter 2nd Acid, Bases and Salts. In my previous class I have already told you what is an acid or base and what is the reactions between acid, bases and water. Today I am discussing how to mix, dissolve acid and bases in water. How to mix and dissolve acid and bases in water. So remember everyone, never mix acid in water in acid. मीन्स अगर आपके पास एक बीकर है उसमें आपका एसिड है एंड सेकंड बीकर में आपका वाटर है, तो वाटर को कभी भी एसिड में ऐड नहीं करना है. अगर आप ऐसे करेंगे तो दिस रिएक्शन बिकम एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, हीट प्रोड्यूस्ड. तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकती है. इट बिकम्स हार्मफुल, यू कैन बर्न. So never do these silly mistakes. Always add acid in water. एसिड को आपने डालना है कैसे, ड्रॉप वाइज ड्रॉप एंड कंटिन्यूस स्ट्रिंग करना है आपको. ठीक है, मिक्स करते रहना है उसे. देन यू ऑल गाइज हैव नोन एसिड गिव्स एज पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन एंड बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन. Example of acid HCl, CH3, COH. Bases is your sodium hydroxide and potassium hydroxide. So acid and base को पता लगाने के लिए we have pH scale. This pH scale में डिजिट्स होती है 0 to 14. तो 17 जो डिजिट होती है ये आपका शो करता है न्यूट्रल सॉल्यूशन. When we move from left to this, from this 7 और न्यूट्रल सॉल्यूशन, सो योर एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग. मतलब 7 से जितना दूर जाएगा इन लेफ्ट साइड उतना ही आपका एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, और 0 के जितना क्लोज कोई चीज़ होगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा. ठीक है. नाउ अगर 7 से राइट साइड को मूव करते जाएंगे तो आपका बेसिक नेचर इंक्रीज एंड एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा. ऑफ कोर्स जब बेस इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा ही होगा. ठीक है. तो मतलब 14 को जो जितना क्लोज होगा वो उतना ही बेसिक होगा आपका और उतना ही कम एसिडिक होगा. या हमेशा याद रखना कि जो 0 के जितना क्लोज होगा, नियरेस्ट 0, नियरेस्ट टू 0, उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक एंड लेस बेसिक. Okay, and nearest to 14 acidic, less and more basic. Okay, and at 7 neutral. लाइक इसके एग्जाम्पल्स हैं वाटर. बेस आपका है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड एसिड्स योर CH3, COH, HCl एंड सो मैनी अदर एसिड्स. सो अगर मैं बोलूँगी आपको लेट यू हैव एन क्वेश्चन दैट सॉल्यूशन हैविंग pH 14, सो बताइए. नहीं, सॉल्यूशन हैविंग pH 10.4. सो आप बताइए कि वो एसिडिक होगा या फिर बेसिक. बताइए. अगर किसी सॉल्यूशन का pH 10.4 है तो बताइए कि वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा अगर उसका pH 10.4 है. Of course it is basic in nature. Why? Because इसका जो pH है वो न्यूट्रल से ज़्यादा है, यानी 7 से ज़्यादा है, इसलिए आपका बेसिक होगा. अगर मैं बोलूँ कि आपका एक सॉल्यूशन का जो pH है आपका 6.5 है तो कैसा होगा ये नेचर में, एसिडिक या फिर बेसिक? Of course it is acidic in nature because जो इसका pH है वो आपका न्यूट्रल 7 से कम है. ओके. Now look at this picture. Pure water and blood
having pH 7.4, so it is neutral in nature. Now move left side from pH 7. Lemon juice having pH 2.2 and gastric juice also having 1.2 pH, so both are acidic in nature. Gastric juice which cause acidity, so they both are acidic than rest. Now if we move right from pH 7, milk of magnesia having pH 10, it is basic in nature, and sodium hydroxide solutions about 14 pH, so it is more basic. These are some questions important for your board examination. What is acid rain? When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. It is harmful for human beings and organisms too. It can cause of many skin infections. Second question is pH in our digestive system. Our stomach produced HCl or hydrochloric acid. It helps to digestion of foods without harming the stomach. But sometimes our stomach produces more HCl and this causes pain and irritation, and people called it acidity. To get rid of this pain, people used bases called antacids. Antacids are nothing but bases. Normally used antacids is a magnesium hydroxide, usually called milk of magnesia. Now, what is pH change as the cause of tooth decay? When the pH of mouth is lower than 5.5, so it caused bacteria present in mouth produce acids by degradation of sugar and food particles remaining in our mouth after eating. The best way to prevent this to clean the mouth after eating food using toothpaste, which are generally basic in nature. Now you have some important salts and their uses. First is sodium hydroxide. When we add sodium chloride in water, it forms sodium hydroxide and produces chlorine and hydrogen gas. Second is bleaching powder. When we add calcium hydroxide with chlorine, it forms CaOCl2. This is your bleaching powder plus H2O. Uses of bleaching powder: for bleaching cotton and linen in the textile industry, as an oxidizing agent. Third is making drinking water free from germs. Third is baking soda. When we add sodium chloride in presence of water, carbon dioxide and ammonia, it forms NH4Cl plus sodium hydrogen carbonate. Then sodium hydrogen carbonate, when we heat it, it forms sodium carbonate and H2O and CO2. What is the use of baking soda? It is used for making baking powder and an ingredient in antacids. Third is also used in soda acids. Washing soda. When sodium carbonate reacts with water, it forms Na2CO3 into 10H2O, washing soda. Now what is the uses of washing soda? It used in glass, soaps and paper industries, used as an cleaning agent for domestic purposes. It is also used to remove permanent hardness of water. Now your next topic is plaster of Paris. On heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate, CaSO4 into half H2O. When we add water in plaster of Paris, it becomes gypsum. CaSO4 into half H2O plus 1.5 H2O molecules, it forms CaSO4 into 2 H2O, gypsum. What is the uses of plaster of Paris? It is used for supporting fractious bones in the right positions. It is used by doctor. Second is used to make toys. Third use of plaster of Paris is to make materials for decoration purpose. Thank you everyone. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.